Hello everyone, welcome to CGBMentors platform. So UNDP has released the Human Development Index for the year 2025. Before starting the class, just let me know, am I audible? सब कुछ ठीक है? Then we will discuss this report in detail. कोई बताएगा? सब कुछ ठीक है? I hope this time it's fine. Okay, चलिए सब कुछ ठीक है? Let's start our today's class and see. We will discuss each and every fact, or we will discuss all the recent findings of this particular report. But before moving forward, we will discuss the static of this particular report. Why? Because static भी उतना ही important होता है जितना आपका current होता है. Because आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट फैक्ट्स एंड फिगर से नहीं आते, वो आपसे कुछ स्टैटिक भी पूछते हैं रिपोर्ट का. एंड दिस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर ओनली CrackGradeB में मेंस में इससे क्वेश्चंस देखे गए थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैटिक. सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन? सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. कौन ये रिपोर्ट रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीजेस दिस रिपोर्ट. एंड फर्स्ट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1990. एंड फर्स्ट रिपोर्ट कब रिलीज हुआ था? 1990 में रिलीज हुआ था. ओके, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच किसने डेवलप किया था? इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने. एंड दिस पर्टिकुलर वर्क वाज एंकर्ड इन द वर्क ऑफ अमर्त्य सेन. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू नेम्स एंड यू नीड टू रिमेंबर ओके दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द Who releases this report? This report is released by the United Nation Development Program, and the first report was released in the year 1990. अब ये report है. So with the help of this particular index, we will measure the level of human development across the world, right? But क्या measure ऐसे हो जाता है? No, we have some dimensions. We have some components of this particular index on the basis of which the country's performance are evaluated. ठीक है? So these dimensions are. So this particular report. Okay, so this particular report has three dimensions, or this particular report is based on three dimensions. First is health, education and standard of living. So you have to remember this thing, that this report has three dimensions: health, education and standard of living. If you will repeat things with me only, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करती हूँ तो उससे क्या होगा, कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी क्लास के साथ साथ. ठीक है? Now the three dimensions of this particular index are health, education and standard of living. Then in the education component, we have two subcomponents. In the education component, we have two subcomponents, that is mean years of schooling or expected years of schooling. First is mean of years of schooling. So it's all about mean years of schooling का simple सा मतलब क्या है? That average years of education received by individual above 25 years age. So mean of years of schooling क्या है everyone? It is the average number of years of education that a person is receiving. और ये person की age कितनी होगी? 25 years से above. Average number of years of schooling कितना मिला है किसी individual को. ठीक है? This is your mean of years of schooling. Then we have expected years of schooling. Expected, it's all about the expectation कि okay, अगर कोई बच्चा स्कूल में गया है, so for how many years that children will remain in the education system, or for how many years that particular individual or that particular children will go to school. So this is your expected years of schooling. So education component का इन दोनों का general हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, देन आपका एजुकेशन कंपोनेंट आ जाएगा. सो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर एजुकेशन कंपोनेंट हैज टू सब कंपोनेंट्स, दैट इज मीन ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 years, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल अबव 25 years of age. Then expected years of schooling for children of school entry age. ठीक है? Now the next component is health. So health component में हम क्या measure करते हैं? It is measured by the life expectancy at birth. Now it is again life expectancy at birth. Basically when a child is born, so there is some kind of expectation कि okay, the average number of years the children will live. So हम जो expectation रखते हैं कि ठीक है इतने साल तक, तो जनरली हम सोचते हैं ना कि 70 साल तक तो शायद जी ही लेंगे. It is our life expectancy कि okay, जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो हम क्या देखेंगे, that okay, for how many years it is expected that this children will live. So this is your life expectancy at birth. Then we have third component. The third component is standard of living component. So how you will measure the standard of living of individuals? So you will measure the standard of living of individual with the help of gross national income. With the help of gross national income per capita, basically the availability of income per individual across the world. Okay, so standard of living component will be measured with the help of gross national income product per capita.
Okay, so these are the 3 dimensions. कौन कौन से dimensions दोबारा बोलेंगे मेरे साथ? Education, health and standard of living. Education component is based on 2 subgroups, that is mean of years of schooling and then expected years of schooling, right? Then health component is measured by life expectancy at birth. Then standard of living is measured by per capita income. Okay, this is the static part that you will have to remember. Okay, now scores मिलता है, इसमें आप स्कोर कितना रेंज होता है, ऐसा स्कोर मिलेगा 0 to 1 के बीच में यहाँ पे स्कोर will range between this 0 to 1. 0 means that the country is not developing at all, and 1 is about that the highest human development has been achieved in the country. Okay, now very high human development countries का कैटेगरी कौन सा होगा, या उनका स्कोर कितना होगा, between 0.8 to 1 points on the index. So very high human development countries will have this particular score between 0.8 to 1. Then we have high human development countries, जिनका स्कोर कितना होगा 0.7 to 0.79. So high human development countries will have a score of between 0.7 to 0.79. Then we have medium human development countries. Medium human development countries का score कितना होगा, it will range between 0.5 to 0.699. And then we have low human development countries जिनका बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, तो उसमें कितना है 0.0 से लेके 0.55 तक points होगा. ठीक है, so basically they have classified countries into 4 categories, from very high human development countries to low human development countries, and the score for very high human development countries will range between 0.8 to 1, and for very low human development countries it will range between 0.0 to 0.550. Okay, now तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले बताया एग्जाम में स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस हो प्रीलिम्स हो, किस में भी आ सकता है. एंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आरबीआई वालों के लिए इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ मेजर हाइलाइट्स ऑफ 2025. वेरी गुड एवरीवन. चलिए, तो मेजर हाइलाइट्स ऑफ 2025. So what is the title of this particular report? See, title जैसी चीजें ना आपके phase 1 में पूछे जा सकते हैं, phase 2 में पूछे जा सकते हैं. टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का आपकी बार का? A matter of choice, people and possibilities in the age of AI. So the title of this report is A matter of choice, people and possibilities in the age of AI. See, AI topic बार बार हो रहा है ना, तो AI पे आपका descriptive आ सकता है. You can get a question on AI. आपके ESI में भी आ सकता है, फाइनेंस में भी आ सकता है, फिर उसके बाद आपका इस पे ऐसे भी आ सकता है. किसी भी एग्जाम की बात करें तो ऑलवेज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, नाउ टाइटल क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI. रिपीट विथ मी, a matter of choice, people and possibilities in the age of AI. Now, who is the director and lead author of this particular report? The director and lead author of this particular report is Pedro Conchicao. Pedro Conchicao. So, Pedro Conchicao is the director and lead author of this particular report, and this report is co-chaired by Laura Chinchilla and the A. Michael Spence. So, this report is co-chaired by Laura Chinchilla and A. Michael Spence. Global highlights की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज में आइसलैंड हैज टॉप दिस इंडेक्स, followed by Norway, Switzerland, Denmark and Germany, and the score of Iceland is 0.972. So basically Iceland is the most developed countries across the country. So very human development में rank first किसको मिला है? Iceland has topped this index with 0.972 value. Remember this thing. Second rank Norway, Switzerland, Denmark, Germany, and you have to remember the top 5 countries. Okay, then we have bottom 5. Bottom 5 में तो 193. So bottom में सबसे बुरी हालत किसकी चल रही है? साउथ सुदान की. So remember this thing, सबसे बुरी हालत किसकी चल रही है? साउथ सुदान की, with the score of only 0.388. Then उसके बाद 192 rank सोमालिया, then 191 Central Africa Republic, then 190 Chad, and then 188 Niger and Mali. So Niger and Mali they are sharing the same rank, that is 188. अब तो ये तो ग्लोबल की बात हो गई, ये आपको पता होना चाहिए. Who is at the bottom? South Sudan with 0.388 score, and who is at the top? Iceland with 0.972 score. Okay, which is followed by everyone, followed by Norway, Switzerland, Denmark and Germany. So ये तो पता होना ही चाहिए. Now we will discuss India specific findings, and the global average HDI value is 0.756. Global average HDI value कितनी है everyone? It is 0.756. अब ये तो सारी global findings होगी. Now we will discuss highlights related to India, because हम यहाँ रहते हैं तो हमें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ना. Now, so India HDI value has increased to
0.685. So India HDI value has increased to 0.685 and now India ranks 130 out of 193 countries, and last year India ranked 133. Now this fact is the most important fact and you have to remember the rank of previous year as well. क्यों? क्योंकि आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है that now India ranked 130, बट पिछले साल का रैंक क्या था? इसमें आपको पता होना चाहिए that last year India ranked 133. Remember this thing? So India का HDI value has increased to 0.685. Okay, now the current rank of India is 130 out of 193 countries and last year India का rank कितना था? 133 and India is in the medium human development category. ठीक है, so our country remains in the medium human development category. Okay, value तो हमने देख लिया है. Now India HDI sub components, so it is 223. Life expectancy at birth has increased to 72. Now expected years of schooling has increased to 13. Mean years of schooling has increased to 6.9 and GNI per capita has increased to $9047. So these are the facts that you'll have to remember. Okay, life expectancy at birth has increased to 72. यानी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो हम इतनी expectation रख सकते हैं that we will live till 72 years of age because our life expectancy at birth is 72 now. Now then expected years of schooling 13. Mean years of schooling is 6.9 and GNI per capita has increased to $9047. And if we will do the regional comparison everyone, China, Sri Lanka and Bhutan is ahead of India. So China, Sri Lanka and Bhutan ahead of India. बांग्लादेश हमारे साथ साथ है. बांग्लादेश also got 130th rank and उसके बाद नेपाल, म्यांमार एंड पाकिस्तान हम लोगों से पीछे हैं. सो कौन कौन से कंट्रीज हमसे आगे हैं वो हमें ध्यान रखना होगा दैट चाइना, श्रीलंका एंड भूटान इज अहेड ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड बांग्लादेश इज एट पार विद इंडिया एट 130th रैंक. ओके, नाउ AI स्किल्स ग्रोथ की बात करें सो इंडिया इज emerging as the global AI leader with the highest self-reported AI skills penetration. So India is emerging as the global AI leader with the highest self-reported AI skills penetration. So सबसे ज़्यादा AI skills penetration कहाँ पे देखा जा रहा है? इंडिया में देखा जा रहा है. So this is a very important statement to read. Now the next is, so basically this particular index has a lot of other index as well, like this India Gender Inequality Index Trends. So gender inequality index is also part of Human Development Index. Now according to this particular index, India has shown progress in reducing gender equality. Obviously in our country gender inequality is reducing, right? Gender inequality कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? Because you know we have launched many good initiatives like Mission Shakti is there, right? Mission Shakti is there. Then we have introduced a law with the help of which now women का जो 1/3 पार्टिसिपेशन वुमेन का जो हमारे जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दीज मेनी इनिशिएटिव्स in India inequality is reducing, right? So now India ranks 102nd. So अब आपको ये याद रखना है that in gender inequality index India's rank is 102nd. Okay, now see, अब this particular index has further few components. Okay, so these components are health, empowerment and labor market. So this gender inequality index further has 3 components, that is health, empowerment and labor market. And health is measured on the basis of maternal mortality ratio and adolescent birth rate, and empowerment is measured on the basis of percentage of parliamentary seats held by women and percentage of the population with at least some secondary education by gender. Now labor market is on the basis of participation in the labor force by gender. So इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए that gender inequality index has 3 components, that is health, empowerment and labor market. And health किसके बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग? maternal mortality rate and adolescent birth rate. And लेबर मार्केट कहाँ से हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो इतना डिटेल में यहाँ नहीं जाना है, आपको बस ये जरूर पता होना चाहिए दैट इट हैज 3 डायमेंशंस. ओके, नाउ रैंक कितनी है इंडिया की? 102nd. ओके, एंड इंडिया का जो जेंडर इनइक्वालिटी वैल्यू है इट हैज improved to 0.403. What is the value of gender inequality index everyone? It is 0.403 and remember this thing, India's rank in this particular index is 102nd. Okay, and India's performance, so India's adolescent birth rate was 14.1
But the problem is that India has one of the largest gender gaps in the labor force. So basically the problem in India is that most of the women is not participating in the labor force. Okay? अब ये बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है. क्यों हो सकता है? Why the women are not participating? एक तो ये भी फैक्टर हो सकता है that now women are continuing their education. एक फैक्टर हो सकता है. But what are the other factors? See, why women is not participating in the labor force? First of all, because of the patriarchal society, where society believes that the अगर जो केयर गिविंग रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वुमेन की है. सो बिकॉज ऑफ देयर केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज समटाइम्स दे हैव टू लीव देयर जॉब्स एज वेल, राइट. किसी की शादी जाती है तो वो काम नहीं करने देते हैं, राइट, बिकॉज वी हैव दिस पेट्रियार्कल माइंडसेट. जो आपका हस्बैंड बोलेंगे यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. सो बिकॉज ऑफ these 2 or 3 reasons many women are not continuing. और fourth ये भी हो सकता है that because women has a lot of responsibilities, they have to play dual role. उनको घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है, but they don't have flexible work opportunities. So basically in India we don't have flexible work opportunities, because of which many women are not continuing or not participating in the labor force. Okay, so these can be the possible reasons because of which we have the largest gender gaps in the labor force. Now this gap is at the rate of 41.3%. Difference between women, that is only 35.1% of the women are there in the labor force, whereas men का percentage देखा जाए तो it is 76.4%. Men तो 76.4% participate कर रहे हैं, but women only 35.1%. Okay. Then if you will adjust, अभी तक हमने क्या किया ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में we were just calculating on the basis of 3 dimensions: health, education, standard of living. But if you will adjust the inequality, because क्या है ना कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ inequalities है, right? Gender inequality is there, digital inequality is there, so many inequalities are there, है ना? So when you will adjust those inequalities in the HDI value of each and every country, then you will get India's inequality adjusted value. अभी कितना कम हो गया? वैसे कितना स्कोर है अभी? 0.685. But when you will adjust the level of inequality that is going in the country, when you will adjust that inequality, you will get the score of 0.475 only. You will get the score of 0.75 only. And India's loss in HDI due to inequality is of 30.7%. So human development, जितना भी हम development कर ले, अगर if you will not eliminate this, if you will not eliminate inequality in the country, then what will happen? See, लॉस होता जाएगा आपका. ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू आपका कितने से कम हो गया है? 30.7% से. ठीक है. इवन आफ्टर एडजस्टिंग इनइक्वालिटी, आइसलैंड इज रैंक्ड एट 1. ठीक है, विद द एचडीआई वैल्यू ऑफ 0.923. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. सो दिस development index is specifically talking about the different genders. So this gender development index is all about कि ठीक है, women, हमने inequality देख ली. Now we just need to see कि okay, how much we are doing for the women empowerment or for the gender development. So this on the basis of this particular index, अगेन आइसलैंड हैज टॉप्ड. ठीक है. एंड इंडिया का जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू कितना है? इट इज 0.874. सो बेसिकली दिस शोज दैट इंडिया इज टेकिंग नेसेसरी इनिशिएटिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, राइट. सो तभी तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा है ना. इट इज 0.874. सो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने वुमेन डेवलपमेंट के लिए, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे. दिस इज योर होमवर्क एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर डिस्क्रिप्टिव पेपर आल्सो. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज Planetary Pressures Adjusted Human Development Index. Planetary pressure basically the loss that we are facing because of the carbon dioxide emissions. ठीक है, because आपको भी पता है कि climate change में जो भी हो रहा है ना, it is reducing the productivity of everyone, right? It will definitely impact the growth of various economies. So if you will include planetary pressure in your human development index, then इंडिया का वैल्यू कितना हो जाता है? इंडिया का वैल्यू गिर के हो जाता है ओनली टू 0.656. पहले वैसे ओवरऑल इंडिया का वैल्यू कितना है एवरीवन? इट इज 0.685, राइट. बट नाउ इफ यू विल एडजस्ट द प्लानेटरी प्रेशर, लाइक योर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? वैल्यू गिर के 0.656 ओनली. ओके. देन वी हैव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलपिंग कंट्री. सो इंडिया का वैल्यू कितना है? इट इज 0.69 and in India 16.4% of the population is living in multi-dimensional. So 16.4% of the individuals are living in multi-dimensional. Now this is it for this particular report. We have discussed each and every important fact. अगर आपने ये वीडियो को दोबारा देख लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, so we can bet that इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा.
जस्ट रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. आई नो बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस किए, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. वी हैव चूजन द CrackGradeB एग्जाम और वी हैव चूजन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम. इसका क्राइटेरिया ये होता है दैट यू ऑल हैव टू रीड n नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट. ओके, अब हम छोटा सा ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स that the country is taking to improve the health or to improve the education level of our people. So human development के लिए हमारी country कर क्या क्या रही है? We need to discuss these things. First is obviously human development के लिए क्या कर रहे हैं? Government of India has launched the प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना initiative under which health insurance is provided. So can we say कि health को support करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना was launched by the government of India to provide the secondary and tertiary care because we want to work or because we want to reduce the out of pocket expenditure of the individual, right, and because we want to improve their health, because we want to increase the accessibility of health facilities for the individual, right. Then for women, government of India has launched the Mission Shakti initiative, right. Government of India has recently passed the women reservation bill, right. Then again, what are the other initiatives? Now the government of India has also launched the National Education Policy of 2020, right? National Education Policy of 2020. Then we have Skill India Mission or Kaushal Bharat Mission. Why Skill India Mission? Because skilling of individuals is very important. Then only their income will increase now, right? So we are promoting human development by following these many initiatives. बहुत सारे initiatives और भी हो सकते हैं, कुछ initiatives आप भी सोचिए, ठीक है. So I hope you have understood each and every fact. अब इसमें समझने वाला कुछ नहीं था, आपको बस याद करने वाला ज़्यादा है. तो फोकस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नेवर एवर इग्नोर द स्टैटिक टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. ओके, चलिए लेट्स एंड दिस सेशन हियर ओनली. ऑल द बेस्ट एवरीवन. वेरी गुड एवरीवन. चलिए लेट्स एंड दिस सेशन हियर ओनली एवरीवन. टेक केयर एवरीवन.